Dear students, in today's lecture we will discuss the examples on consistency of system of linear equations. Homogeneous system of linear equation, non-homogeneous system of linear equations. Okay, so before going to start the example, please subscribe the YouTube channel if you are not subscribed yet, so that you will get the updates time to time. Is that clear? So let us see, before starting the example, we discuss consistency of non-homogeneous system of linear equation, which we have already studied in the one of our last lecture. Is that clear? So here non-homogeneous system of linear equations is a consistent consistent means has a solution if rank of A is equal to rank of K, otherwise it is inconsistent means no solution. Is that clear? So inconsistent, what are those conditions we have studied? So look at here. We studied number 1. If rank of A is equal to rank of K is equal to N. N is what? Unknowns. Is that clear? Then system is consistent and has unique solution. We have studied this. Okay. Then second number. What is second number? If rank of A is equal to rank of K and that is less than N, that is number of unknown, then system is consistent and has infinite solution. ये भी हम पढ़े. Okay. And third one is this. Okay. If rank of A not equal to rank of K, then system is inconsistent and has no solution. So ये पढ़े हम. Okay. और in immediately last lecture we have studied a homogeneous system of linear equations is always consistent because it either possesses a trivial solution or non-trivial solution. Is that clear? So in this case what we studied? In this case what we studied? Number 1. If number of equations equal to number of unknowns and determinant of A not equal to 0, that is rank of A is equal to N. बराबर है? Then system has a trivial solution. That is x is equal to y is equal to z is equal to that 0. Is that clear? Or number 2, if m is equal to n and determinant of A equal to 0, that is rank of A less than n, then system has a non-trivial solution. That is n minus 1 linearly independent solutions. Is that clear? And तीसरा point इसमें हम पढ़े, if m is less than n means number of equations are always
less than n, then system always has non-trivial solution. Is that clear? So ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़े और उसके लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़े, ऊपर का पढ़े, पॉइंट नंबर 1. Is that clear? So let us see now example. Find the value of lambda and mu so that the system of equations 2x plus 3y plus 5z is equal to 9, 7x plus 3y minus 2z is equal to 8, 2x plus 3y plus lambda z is equal to mu has no solution, unique solution, infinite solution. Is that clear? So can we start here? Let us see solution. तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा? मैट्रिक्स फॉर्म होगा 2 3 5 राइट, 7 3 minus 2 2 3 लैम्बडा, ये हो गया. कैपिटल एक्स क्या हुआ? एक्स वाई जेड. इज दैट क्लियर? एंड व्हाट इज द राइट हैंड साइड? कैपिटल बी, 9 8 and mu. Is that clear? This is equation 1. Okay, that is ax is equal to b. This is equation number 2. Okay, now let k is what? Augmented matrix, right, which is formed by a and b. Okay, so it is equal to, ये को k को लिखते हैं. तो अब पहले ये लिख लेते, 2 3 5 7 3 minus 2 2 3 लैम्बडा और b क्या है? 9 8 म्यू. ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. नाउ टू फाइंड रैंक ऑफ k बाय एलिमेंट्री रो transformation. Is that clear? By elementary row transformation. So what we do here, we can make these two zero first. इनको जीरो करना है. तो R2 tends to 2R2 minus 7R1, बराबर है. And R3 tends to R3 minus R1. Is that clear? So what you will get? तो देखो हम रफ कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, 2 3 5 9 और यह हो जाएगा 2 7 14 minus 7 2 14 0, बराबर है. 6 minus 21 minus 15, बराबर है. माइनस 4 माइनस 35 माइनस 39, बराबर है. देन 16 माइनस 63 माइनस 47. देन R3 माइनस R1 0 0, लैम्बडा माइनस 5 म्यू माइनस 9, बराबर है. यह है. तो लेट अस वी राइट दैट. So we have k is equivalent to, कितना आएगा? 2 3 5 9, बराबर है. उसके बाद में 0 माइनस 15 माइनस 39 माइनस 47, 0 0 लैम्बडा माइनस 5 म्यू माइनस 9. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए. जस्ट
आपको यहाँ पे k का ये जो पोर्शन है, ये दिस इज इक्विवेलेंट टू ये, और दिस एंटायर k is equivalent to k. Is that clear? So now to find lambda and mu are unknown values. Okay, lambda may be equal to 5, दूसरा lambda not equal to 5 हो सकता है, तीसरा mu ना इक्वल टू 9, और चौथा mu नॉट इक्वल टू 9. 4 पॉसिबिलिटीज है, बराबर है. सो दीज आर 4 पॉसिबिलिटीज. तो लेट अस डिस्कस विद दीज 4 पॉसिबिलिटीज हियर. ओके, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 5 अगर रहा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. तो रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2, बराबर है. लैम्बडा इज इक्वल टू 5, लैम्बडा नॉट इक्वल टू 5 रहा तो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए, ये नॉन जीरो हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए विल इक्वल टू 3. नाउ म्यू इज इक्वल टू 9 रहा तो इसमें लैम्बडा भी है, म्यू इज इक्वल टू 9 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 5. ओके, तो एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 5, तो आपको मिलेगा रैंक ऑफ के इज इक्वल टू 2, बराबर है. एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू एंड लैम्बडा any value. Okay, तो in that case rank of k is equal to 3. तो rank of k हमको 2 इसमें मिलेंगे. Okay, so we put this in the table form now. So serial number देखिए, हाँ 1. Suppose lambda is equal to 5, lambda is equal to 5 and mu equal to 9. तो क्या निकाला है हमने, लैम्बडा इज इक्वल टू 5, म्यू इज इक्वल टू 9. ये रैंक ऑफ के कितना है, 2, रैंक ऑफ के 2, और रैंक ऑफ ए कितना है, लैम्बडा इज इक्वल टू 5 के लिए रैंक ऑफ के इज इक्वल टू 2, बराबर है. एंड देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ के. ओके, एंड द सिस्टम इज consistent. Okay, and that is equal to 2 less than number of unknowns. Okay, means we have infinite solution. Infinite solution, बराबर है. एक हो गया. अब दूसरा लेते हैं हम. Number 2 is lambda is equal to 5 and mu is not equal to 9. Lambda is equal to 5 अगर रहा तो रैंक ऑफ ए इज 2, बराबर है. एंड लुक एट हियर, लैम्बडा इज इक्वल टू 5, रैंक ऑफ ए 2 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 9, रैंक ऑफ के इज 3, रैंक ऑफ के इज 3, बराबर है. एंड देयरफॉर रैंक ऑफ ए not equal to rank of k. Okay, and therefore the system is inconsistent, and therefore has no solution. Is that clear? Now third point is, you suppose lambda not equal to 5 and mu equal to 9. So what will happen? Lambda not equal to 5, this, so rank of a 3, and rank of k, देखो mu not equal to lambda not equal to 5,
तो ये जो k का जो है नॉन जीरो हो जाएगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 5 एंड म्यू नॉट इक्वल टू म्यू इज 9, so rank of A is equal to 3. Is that clear? So it means that rank of A is equal to rank of A, and that is equal to number of unknowns. Okay, that is system is consistent. Okay, and has unique solution. Unique solution. और चौथा पॉइंट कौन सा है? What is the fourth point? Lambda not equal to 5, mu not equal to 9. So in that case also, the rank of A 3, mu not equal to 9, rank of K 3, and therefore ये as it is कैरी होगा, ये जो पोर्शन है ये as it is कैरी होगा, बराबर है. तो has a unique solution. Okay, and thus what is the solution? And therefore no solution if no solution कब है? ये if lambda is equal to 5 and mu not equal to 9. Mu not equal to 9. Unique solution. Unique solution काय के लिए होगा? If lambda if unique solution, ये मतलब दोनों केस में lambda not equal to 5, lambda not equal to 5 and mu equal to 9, not equal to 9 means any value. Is that clear? तो ये हो गया सेकंड. एंड थर्ड इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन कौन सा है? ये. ओके, सो इफ लैम्बडा इज इक्वल टू 5 एंड म्यू इज इक्वल टू 9. Is that clear? So the system has a infinite solution. So did you understand? Now second example. Let us see second example. Test for consistency of linear homogeneous equations. X plus 2y plus 3z plus 2w is equal to 0. X plus 3y plus 5z plus 5w is equal to 0. 2x plus 4y plus 7z is equal to plus w is equal to 0. Minus x minus 2y minus 6z plus 7w is equal to 0. So let us see solution. We write first in the matrix form. Matrix form में क्या हो जाएगा? 1 2 3 2, बराबर है. 1 3 5 5, 1 3 5 5, 2 4 7 1, minus 1 minus 2 minus 6 7, x y z w, and that is equal to 0 0 0 0. ओके, m इज इक्वल टू n है यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स. ओके, so what we find now? We find out rank of K. Find rank of A. ओके, तो क्या करेंगे अभी? इन ये we do R2 tends to R2 minus R1, R3 tends to R3 minus 2R1, R4 tends to R4 plus R1. So A is now equivalent to तो क्या होगा? 1 2 3 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब R2 minus R1 0 1 2
3 बराबर है. देन 2 minus 2 0, 4 minus 4 0, 7 minus 6 1, 1 minus 4 minus 3 बराबर है. देन R4 plus R1 0 0 right, then minus 3, then 9. ओके. नाउ ये दोनों की रिलेशन देखिए, 1 into minus 3 minus 3 minus 3 into minus 3 plus 9. तो what we do, R4 tends to R4 minus 3 times R3. ओके. सो ये इज इक्विवेलेंट टू क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, 0 सॉरी 1, R1 तो एज इट इज रहेगा 1 2 3 2 0 1 2 3 0 0 minus 3 9 बराबर है. और लास्ट रो हो जाएगा 0 0 0 0. सो दिस इज अ रो reduced form बराबर है. एंड therefore number of non-zero rows, number of non-zero rows कितना है, 3. okay, and so we write here rank of A is equal to 3 and that is less than n, that is equal to 4 number of unknowns for given case m is equal to n, and therefore the system has non-trivial solution, that is n minus 1 linearly independent solutions. Now look at here, we write this is equation 2. By 1 and 2 we write a के जगह a की वैल्यू लिखेंगे इक्विवेलेंट, x लिखेंगे और 0 लिखेंगे. तो what we are by equation 1 and 2. ओके. तो 1 a का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है हमें, 1 2 3 2 बराबर है. देन दूसरा क्या है, 0 1 2 3 0 1 2 3 बराबर है. और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, 0 0 minus 3 9 0 0 minus 3 9 0 0 0 0. और दूसरी मैट्रिक्स है x y z w एंड राइट हैंड साइड 0 0 0 0 राइट. इसमें हम एक और ओके. सो व्हाट वी राइट नाउ, तो क्या मिलेगा हमें, इन इक्वेशन फॉर्म. पहला इक्वेशन होगा x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 2w इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. दूसरा इक्वेशन होगा 1y प्लस 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ओके. और तीसरा होगा -3z प्लस 9w is equal to 0. This is equation 5. Okay. So let w is equal to k in 5. बराबर है. So we get 3z is equal to 9k and therefore z is equal to 3k. ये पहला आंसर होगा, z is equal to 3k.
W is equal to K. We substitute the value of W and Z in equation 4. Okay. So now by 4. So what is 4? क्या है? Y plus 2Z plus 3W. Y plus 2Z plus 3W is equal to 0. तो कितना आएगा? Y plus 2Z, 2 into Z means 3K plus 3W means 3K is equal to 0. Y plus 6K plus 3K is equal to 0. So Y plus 9K is equal to 0, and this implies Y is equal to minus 9K. This बराबर है. And now by equation 3. What is equation 3? X plus 2y plus 3z plus 2w. बराबर है. तो what is x plus 2y plus 3z plus 2w is equal to 0. So x is equal to minus 2y minus 3z minus 2w, and that is equal to minus 2y means minus 9k minus 3 into z. How much is z? 3k. बराबर है. Minus 2w means k. So it is equal to minus 2 minus 9k, that is 18k minus 9k. बराबर है. Minus 2k, and that is equal to 18 minus 9, that is 18k minus 11k, and that is equal to 7k. So therefore x is equal to 7k. So we have got all values. So thus we get W is equal to K, Z is equal to 3K, X is equal to 7K, Y is equal to minus 9K. So did you understand this? Is that clear? So in this way, here the system was homogeneous. M is equal to N. Rank of A was less than N, and therefore it was having N minus 1 linearly independent solution, non-trivial solution. Is that clear? So if you understand the lecture, please like the video, right? Share it to the students and subscribe the channel. Thank you. Thank you very much.